with folded hands. This is a request to all the officials, to all the administration. Please, please, please bail us out from this problem. We are facing a lot of issues. It's a request to all of you. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. क्या हो गया सर आप लोगों को? क्या मतलब क्या तकलीफ है इन लोग जेप्टो से? अच्छा, ये देखिए जेप्टो वालों ने, इनके पास 100 राइडर हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनके पास हाउसकीपिंग के लोग नहीं है। ये यहाँ के लोग हैं ना? हाँ, हाँ, ये देखिए दारू का कैन पड़ा हुआ है, ये रहा, इधर ये बॉटल्स पड़े हुए हैं, ये देखो पूरा बैग में कैंस पड़े हुए हैं। लेकिन ले लिया, वो ले लिया। नहीं, आज तो पूरा बंद है। अरे कितना हो गया। हर बार का टाइम दो, आज मतलब पूरी शटर डाउन करना, आज बंद करा देते। नहीं, शटर डाउन की जरूरत है, अपना गेट बंद है ना, काफी है। अपना गेट करते हैं, शटर उसको खुला रहने दे। हाँ, अब मार बार नहीं। When we are trying to install these boards, this is the private road, and we are trying to install our own safety board for the no parking, so that when the school buses comes in the morning, our kids doesn't face the problem and there is no vehicle passed here. But we have been threatened, we have been not allowed to put the board on our private road, which is our road, and we have been just asked to make the permissions from the police station, PCMC, where we are just moving from pillar to post. This is the classic ways where the common tax-paying citizens are suffering, where you need to put law-abiding citizens trying to put no parking zone, where so much permissions are asked, where no permission being asked for any illegal construction in the Wakat. मी गजेंद्र देशमुख, सुकासा सोसायटीचा रहिवासी. एकीकडे आपण पुणे, पिंपरी चिंचवड याला IT हब बनवण्याच्या गोष्टी करतो. दुसरी एक सुकासा सोसायटी आपल्या सेफ्टीसाठी भांडते आहे. एका साईडनी बघत असाल तर कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट आहे, जे सोसायटीला लागून आहे आणि खूप प्रकारे ते हानिकारकसुद्धा आहे. इथले लोक सेफ्टी मागत आहेत, जी बेसिक गोष्ट आहे, आणि तीसुद्धा जर कोणी देऊ शकत नसेल तर आत्तापर्यंत आम्ही जे सर्व नेत्यांना सर्वांना जी मदत केली आहे त्याचा काही एक फायदा राहिलेला आहे. मी सुधीर देशमुख, सेक्रेटरी सुकासा सोसायटी. आमची सोसायटी 2013-14मध्ये रजिस्टर झाली. त्यानंतर 2016ला आम्हाला प्रॉपर कन्व्हेन्स मिळालं. डीम्ड कन्व्हेन्स झालं. गव्हर्नमेंटनी ही जमीन जी बिल्डर थ्रू आम्हाला हँडओव्हर झाली. तर आजच्या दिवसाला आम्ही प्रॉपर टायटल होल्डर आहे. संपूर्ण रस्ता सोसायटीच्या नावी आहे. परंतु समूह आता बाजूच्या प्लॉटकडनं त्याच्यावरती जो हक्क दाखवला जातो किंवा फोर्सफुली एंट्री केली जाते, त्यांनी आता आमची जी भिंत होती अगदी 2011पासून गुगलवरती जरी बघितलं तर आमची भिंत होती, ती भिंत फोर्सफुली तोडून जेप्टो असेल, स्नूकर असेल किंवा बाकीच्या जे एस्टॅब्लिशमेंट आहे त्या अनधिकृतपणे चालवतात ते तर आहेच आहे, पण त्याचा त्रास सोसायटीधारकांना भरपूर आहे. बरेच सारे इन्सिडेंट घडून गेलेत. त्यात सेफ्टीच्या बाबतीत म्हटलं नाव नाही घेऊ शकत, परंतु छोट्या मुलांना भरपूर त्रास पण झाला. त्यानंतर रात्री बेरात्री दारू पिऊन दंगा घालणं, लेडीजला त्रास देणं, ह्या गोष्टी कंटिन्युअसली आम्ही एव्हरी डे इन डे आऊट आम्ही हे फेस करतो. आज जरी बघितलं प्रत्येक विकेंडला सोसायटीतले रहिवासी आम्ही 200पेक्षा जास्त घरं, म्हणजे 200 घरं आणि 500पेक्षा जास्त लोक आतमध्ये यायचं म्हटलं तरी आमच्यासाठी एक कसरत असते. आतमध्ये यायला दररोज संध्याकाळी विकेंडला हा चॅलेंज असतो आणि आम्हाला धमक्या दिल्या जातात. मॅनेजमेंट कमिटीला तर सारख्या धमक्या मिळतात की तुम्ही कामध्ये पडताय, आमचं आम्ही बघून घेऊ वगैरे वगैरे. आणि त्यानंतर जर बघितलं तर कुणी रेसिडेंटनी चॅलेंज केलं की इथं पार्किंग नका करू, आम्हाला त्रास होतो, त्यांनाही धमक्या दिल्या जातात. तर आणि एवढंच नाही तर भाडेकरू जे आहेत तेही आजकाल उलट बोलायला लागले की ते आम्हाला, म्हणजे त्यांचे भाडेकरू आम्हाला धमक्या देत आहेत. तर ऑल अँड ऑल जे काय 10 वर्षापूर्वीची परिस्थिती होती, म्हणजे पीसफुल लिव्हिंग होती, आजच्या दिवसाला फुल्ली कॉम्प्रोमाइज्ड आहे. Your name first. I'll hold it. I am Tanvi Tirve. I'm a resident of this society. So I bought this place in 2015 or 2010 actually. And the whole objective was it was a gated community. It was a safe place for us to stay. So that's the reason we bought a place here. And you can see how beautiful this, everybody is all educated people here. Now what happened after all this encroachment and different establishment that have formed here, Zepto, snooker, all of this, it's just like the safety is just accommodated here.
and there is a lot of gundagardi by these people. So everybody feels unsafe, and we do not want an incident to happen to our children. These days you hear so much about all these things happening for small kids, whether it's a small girl or a boy or whatever. We do not want it to happen to our children here. So yeah, it is an unsafe place, we feel. And every time, even a child who used to go on cycle to her tuition, she now says, "I please drop me, dad." So what does it leave? How at this age, if they're feeling unsafe, how are they going to feel confident in the society when they grow up? So that's my point here, and I think that's what all of us are worried about. Yeah. Hello, my name is Tejaswini Bapat. I'm a resident and chairman of Sukasa Society. We have been facing a lot of issues from past almost 2 years because of the neighboring plots where we have illegal construction and commercial establishments, which are affecting us in many ways, because there is a dark store, snooker club, and other commercial establishments which run late into night. They are in illegal construction. They don't have the necessary permissions. So our security, it is not just our security that is kind of compromised, but also there are other issues like the fire norms and noise pollution, general sanitation. We are not sure how they manage it. That's it, yeah. हेलो, मेरा नाम चारू है और मैं एक और पॉइंट है जो कवर करना चाह रही हूँ. सबने सिक्योरिटी कियोस्क सब कवर किया है. इनकी जो ये रैश ड्राइविंग है, जो जेप्टो गाइज हैं और बाकी ये जो लोग भी अंदर आ रहे हैं, ये स्नूकर क्लब वाले, इनकी रैश ड्राइविंग के बारे में, क्योंकि एक इंसिडेंट है जो मेरे सामने हुआ. वो इंसिडेंट ऐसे है कि मैं अंदर आ रही थी और मेरे आगे एक सीनियर सिटीज़न थे और उसी टाइम पे जेप्टो गाय वाले ने एकदम से ऐसे बाइक ऐसे जिगजैग करके निकाली और वो गिर पड़े. ओके, हमारी सोसाइटी के एक जो हैं उन्होंने उनको उठाया. उसने उठाया भी नहीं, उसने देखा भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं करा एंड वो डायरेक्ट निकल गया. एंड हम दोनों ने जाके उनको उठाया. तो अभी ये बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है, राइट. हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो भी सीनियर सिटीज़न यहाँ पर रहते हैं, इवन एनीवन जो भी ड्राइव कर रहा है, जो भी ड्राइव करके जा रहा है, आ रहा है, ये अभी इसके लिए सेफ़ नहीं रहा, राइट. क्योंकि अभी क्या होता है, वो कैसे भी ड्राइव करते हैं. हमें पता है हमें अपने लेफ़्ट साइड चलना है, लेकिन वो राइट साइड से निकालेंगे और वो जिगजैग करके निकालेंगे और पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट करके कोई ना कोई हार्म होता ही है, राइट. सो दैट वाज माय पॉइंट. थैंक यू. सो ये जो हुआ इंसिडेंट, ये एग्जैक्टली कब हुआ? 1 मंथ होने को आ रहा है ये. या और एंड देयर आर रेगुलर, मतलब रेगुलरली ऐसा होता है कि उन लोग स्पीड करते हैं. या रैश ड्राइविंग एंड ऑल. कोई ना कोई कंफ्यूज हो रहा है, गिर रहा है, राइट. एंड हमारे लिए वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल. एंड कुत्ते को छोड़ देते हैं ये लोग रात के टाइम पे. तो लोग क्या करते हैं, जैसे निकल रहे हैं वॉक करने के लिए, कुछ भी, वो उनको बाइट कर ले रहा है. एंड दैट इज वेरी, छोटे बच्चे को काटा, बड़ों, एक हमारे सीनियर सिटीजन को काटा है, देश पांडे अंकल को काटा है. तो बहुत डेंजरस हो गया है अभी हमारे यहाँ पे और हम लोग नहीं सेफ फील कर रहे हैं. इसलिए प्लीज़ आप जो भी कर सकते हैं हमें हेल्प करिए. थैंक यू. Thank you, ma'am. Coming from the gate that you see this road behind me, that stretch is in the society's documentation. This belongs to the society, this entire stretch. But the guys on the right, their vehicles come in, there's a lot of noise in the night, people are drinking, smoking, and this goes on till about 4 a.m. in the morning. So they're living in a state of fear. The big question is, how long is this going to last? How long will this terror factor take place over here in Sukasa Society? And will the PCMC and the police department move in, take action and make sure? And here on the left, if you can see, also the Zepto is there. Basically, it should be from this side
and it should not be from this gate. This gate stretch belongs to the society, but they have forced their way in, and they have terrorized and intimidated the residents and the managing committee with threats by using this gate for their commercial purpose, which should not be the case. Prince Chaudhary signing off for Pune Times Mirror from right outside Sukasa Society in Wakad.